Hi everyone, making this video after a long time about credit underwriting because मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्रेडिट अंडरराइटिंग कैसी हो सकती है और क्रेडिट अंडरराइटिंग डोमेन में जॉब कैसे मिल सकता है। अभी किसी ने मुझसे ये भी पूछा कि क्रेडिट अंडरराइटर्स के लिए जो जॉब पैरामीटर्स हैं उसमें व्हाट इज़ द सैलरी स्ट्रक्चर, व्हाट आर द बेसिक नॉलेज दे शुड possess, what are the basic learning mechanisms. So what I would like to say is credit underwriter का जो job है वो basically it cannot be defined by any particular study essentials. But क्या होता है time के साथ आप सीखते हो. It is more of an intuitive thing to do because its ultimate goal is to assess the risk and risk जो involve होती है in terms of lending money, उस risk को assess करना ही underwriter का main काम रहता है. तो आप basically जो commerce वाले हैं, जो CA किया हुआ है, आपने CA नहीं भी किया हुआ है तो accounting का आपको knowledge है, so that you can study the balance sheets well, you can assess the income well, and credit worthiness you can check. So it is more or less an analytical job. और आप धीरे धीरे ही आता है, ऐसा स्टार्टिंग से ही आप एकदम इवेलुएट करोगे वैसा नहीं हो जाता. बट you need to understand a lot of things, the risk parameters basically. So if you are calculative at risk taking, this job is for you. What it includes is like credit report review. Of course, the credit report these days, there are so many tools you can assess the background of the client or the customer who's approaching you for the loan. So you can go through the CIBIL reports, you can see the score charts, you can calculate the scores based upon your in-house softwares, and you can do a lot of background checks. FI you can do, you can uh, do a lot of interviews with him, uh, field checks, background checks, document checks. All these are a part of credit review, the basic report review. Then comes the verification part of the income, which mostly in most of the cases आपको ये नहीं पता होता है कि बंदा कितना कमाता है और कितना उसका डिस्पोजेबल इनकम है और कितना उसके पास में EMI जो रेशियो वो बोल रहा है whether he can afford it or not, उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है. तो उस चीज़ का ही आपको एनालिसिस करना सबसे मेन टास्क रहता है. सो इनकम फॉर अ सैलरीड पर्सन इट इज़ ईजी टू गॉज, बट उसमें भी केसेस होते हैं. और फॉर अ बिजनेस पर्सन एंड इफ़ यू डोंट हैव एन इनकम प्रूफ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको असेस करना. सो वो कुछ चीज़ों पे बेस करता है. नाउ डेट टू इनकम रेशियो अगेन इज़ अ पैरामीटर जो कि इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है. फॉयर है, DBR है, ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स जो हैं. फॉयर इज़ लाइक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो एंड DBR इज़ द डेट बर्डन रेशियो. ऑलरेडी अगर कुछ लोन्स चल रहे हैं तो व्हाट इज़ द डेट बर्डन दैट ही इज़ पेइंग. फिर डेट टू इनकम DTI जो फैक्टर है, that is like that enables you to leverage a customer to an extent कि कितना आप उसे leveraging दे सकते हो, कितने का लोन आप उसका sanction कर सकते हो. Then of course in case of secured loans में what is the collateral value, what is the amount of LTV that he's looking for, loan to value, what is the loan to value that he's looking for. एंड मॉर्गेज हो रही है प्रॉपर्टी तो उसमें क्या आपके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या रिस्क पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या बेनिफिट पॉइंट्स हो सकते हैं. LTV जितना कम रहेगा उतना रिस्क जो है वो कम रहेगा. देन स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हिज हिस्ट्री अबाउट द क्रेडिट स्कोरिंग, एंड ऑफ कोर्स उसका असेट्स एंड सेविंग्स क्या है वो भी मैटर करता है.
And finally, you decide upon the term of the loan depending upon what the criteria or the parameters for the loan are. ये सारी चीज़ें जब आप एनालाइज करते हो, these are more or less analytical in nature. और इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 20,000 to 25,000 एज अ बेसिक सैलरी. बट एज यूर एक्सपीरियंस, तो टायर 1 सिटी में आपको एक मैनेजरल लेवल पे, व्हेन यू गोइंग इनटू अ मैनेजरल लेवल विद सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इनटू दिस फील्ड, तो you can expect like between 70,000 to 80,000 net take home. That should be the amount which you may expect in a tier 1 city. And it depends upon the company also. कहीं हो सकता है 30,000, 40,000, 50,000 भी ऑफर हो. तो डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है. और टायर 2 सिटीज़ में या नॉन रीजनल लोकेशंस में, मतलब if it has a regional office, there's a different story about it. And if it is not a regional office location and it is a not a hub location, then the salary might be slightly lower. But of course, credit underwriting जो है, it takes a lot of efforts, and of course integrity counts a lot. The person who's integral and who values trust, that is the person who's most suitable for a credit underwriter's job. So whoever is seeking a role of a credit underwriter and looking for a job, all the very best to you, and I hope this answers your query. अगर आपके और भी सवाल हैं और आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो आप मेरी वीडियोस पे ही नीचे कमेंट कर सकते हो. आई शैल गेट बैक टू यू. या फिर लिंक्डइन पे अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन देयर. थैंक यू सो मच.